तो आज हम डिस्कशन करवा एनिमल्स टिश्यू विषय रे। लाइक प्लांट्स, तो प्लांट्स विषय रे हम प्रीवियस क्लास रे देखिले एनिमल सेल्स आर आल्सो ग्रुप टुगेदर एंड स्पेशलाइज इन परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। ये विषय में ग्रुप ऑफ सेल टुगेदर हेकी तांकर वर्क परफॉर्म करंती सेपरेटली है नै जे जार वर्क करे हम डिटेल्स पढिबा। These groups of similar cells from animal tissue let us form a simple activities. Blink your eyes quickly, clench and open your fist, take a deep breath, toss something warm or cold. ये एक्टिविटी तुम्हें करियो। देखियो कौन देचे हाउ थिंग विच टिश्यू हेल्प्स यू मूव। देखियो ए सबथि पई हमको टिश्यू केमिति हेल्प करछि। Which tissue to able to you to sense heat or cold? किछि टिश्यू अछि जे कि हमरो हीट और कोल्ड को जानबारे हेल्प करछि है नै। कोई टिश्यू को टिश्यू हमको ऑक्सीजन एंटर करछि ब्लड को, ब्लड रे ऑक्सीजन रहि ना। Which tissue hold the body together to the skin does not fall off? Many such questions can be asked. बहुत गुड़े एमती क्वेश्चन आछे। तो एटा इंटरेस्टिंग कोन बाय पिले हमें निज विषय रे पढिबा। एनिमल टिश्यू माने हमें भी जाउचे तो हमर भी टिश्यू विषय रे हमें डिस्कशन करिबा। Many such questions can be asked, but the answer is the diversity of animal tissue, which are specialized adapted perform different functions. ताले आम बॉडी रे भी सेमिति कोन अछि सेमिति हमें प्लांट्स विषय रे पढले डिफरेंट टिश्यू रोज डिफरेंट वर्क पई सेमिति एनिमल्स रे भी कोन अछि डिफरेंट टाइप्स रो टिश्यू अछि ग्रुप ऑफ सेल्स को नेके। ताले बे एक्सप्लोर करिवा। फास्ट देखिवा कोन एपिथेलियल टिश्यू। फास्ट एनिमल टिश्यू आसला को टिश्यू ना एपिथेलियल टिश्यू। आ स्ट्रक्चर आर फंक्शन विषय रे फास्ट डिस्कशन करिवा हम। एपिथेलियल टिश्यू फास्ट कौन जानिबा हमें। एपिथेलियल टिश्यू forms the outer covering of the body माने स्किन टा होचे एपिथेलियल टिश्यू बुझेला ना। and also line and internal organs रो लाइन रे भी रहि छै कोन एपिथेलियल टिश्यू such as ताले इंटरनल रे कोन रहला जेमति कि माउथ इंटरनल, लंग्स आ जो ब्लड वेसल, देन इंटेस्टाइन जो रहला लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा ना। ताले हमें जानले कोन ना एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म है हम जो बॉडी स्किन रो। ऑल्सो इंटरनल ऑर्गन रे भी रहे। इंटरनल ऑर्गन कौन कौन ना माउथ, लंग्स, ब्लड वेसल एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जान टू टाइप्स स्मॉल इंटेस्टाइन, it is composed of closely packed cell with a very little space between them। anka bhitar bahut little space tha, कम space, and the structure prevent the entry of the germs reduce। हाँ एटा important point कौन है। it is composed of a closely packed cell। इस आरो सेल गुडा पूरा closely pack ही थांदी बहुत कम स्पेस रे तांका भीतर बहुत कम स्पेस थाए। this structure prevent entry जहा फल रे कि पिले जोठी स्पेस नथियो सेठी आ कोन जिंस एंट्री करि परिबो कि नहीं। तो सेठी पाई ही जर्म्स हो कि जहा हो हमें को एंट्री करे नै हम बॉडी भीतर स्किन रे सहज रे कोन जाई परिबो कि एंट्री करि परिबो केते बेले ना जोठी जदी इंजुरी हंगा हे गला ताले सेठी जर्म्स एंट्री करि परिबो कारण स्किन डा उठी गला सेठी पाई हमें कोने जो सेप्टिक हे जाउछ बेले बेले। तो ताले हमर स्किन रे रहि छि कोन एपिथेलियल टिश्यू ये कोथरे हेल्प करे ना क्लोजली पैक हेकी रही था भीतर स्पेस न था से कौन जर्म्स एंट्री करि पारंदिनी बुझेला तो। नेक्स्ट देखियो आ कोन वाटर लॉस हुए एंड आल्सो हेल्प्स द ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन हेल्प करे सिक्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस हेल्प करे एपिथेलियल टिश्यू। Different types of epithelial tissue are structurally adapted to
ताले पुनी टिश्यू तो रसिला हमर एपिथेलियल टिश्यू पुनी डिफरेंट टाइप्स रो एपिथेलियल टिश्यू अछि एंड देखिबा एबे अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर रिलेटेड आमे को फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू लागु छै से विषय रे हम डिस्कशन करिया characteristics of a function and a structure कहार फंक्शन और स्ट्रक्चर बढ़िवा ना एपिथेलियल टिश्यू रो कारण हमें पढ़ले जे डिफरेंट टाइप्स रे एपिथेलियल टिश्यू अछि से जो डिफरेंट टाइप्स रे एपिथेलियल टिश्यू अछि कौन कौन डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यू अछि से विषय रे हमें सॉरी तार कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रक्चर विषय रे डिस्कशन करबा देखिबा आज को पर्यंत टारगेट रखिबा हमें skeletal systems types of joint ए पार्ट टा नेक्स्ट क्लास रे पढ़ेबा 3.4 बाकी आपको जहाँ अच्छा जैसे कर ओके पहले देखो एबे देखियो आप फंक्शन कौन एक्सचेंज helps in a rapid diffusion of a liquid and gases कौन करे rapidly diffusion करे का को liquids को gases को structure कौन आरो ना single layer of thin a flat cell figure 3.11 कहछि figure 3.11a 3.11a ए structure दा ये जो सब देछि structure ये सब कोन different types of epithelial tissue बुझेला तो जो ए पार्ट टा देछि एटा ए पार्ट टा कथा हम एठी डिस्कशन करूचे कौन डिस्कशन करले ना इट हेल्प्स टू डिफ्यूजन एंड लिक्विड एंड गैसेस ये लिक्विड और गैसेस को डिफ्यूजन करे बुझेला सिंगल लेयर ऑफ अ थिन फ्लैट सेल ये पूरा फ्लैट है कि अछि आ थिन ये सब थिन ये देखा आ टिके ठीक रहे आठु आ सब ठीक रहे बुझो छी तो लाइनिंग ऑफ द टिश्यू ए टिश्यू लाइनिंग गुडा द ब्लड वेसल एंड द लंग्स कोठी थाए ब्लड वेसल आ हेड जो स्ट्रक्चर कोठी आसिला लंग्स वेसल बुझी पारलो फर्स्ट टाइप रो एपिथेलियल टिश्यू ताले ये कौन करे एक्सचेंज करे कौन एक्सचेंज करे लिक्विड और गैसेस से सब है नहीं नेक्स्ट आसिला प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन भाई को एपिथेलियल टिश्यू अछि के प्रोटेक्शन दो केमिति प्रोटेक्शन दो छी प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी माने मैकेनिकल इंजुरी हेले फ्रिक्शन एंड एंट्री ऑफ माइक्रोब्स जदी माइक्रोब्स एंट्री करला एथरो हमको प्रोटेक्शन करिवो मेनी लेयर ऑफ सेल आरो बहुत गुडे लेयर अछि आउटर सेल्स आर फ्लैट आउटर टा हो जे फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड टाइटली हिकी थाए देखो 11 बेटा एगो टिको देखो ना एवडा सब टाइटली पैक्ड हिकी नहीं आगे नहीं रे बोले जो टाइटली पैक हिकी नहीं अरे এই গোটিको এইটা বি আমি এই কথা এই ডায়াবেটিস ডিসকাশন করছি এই সব টাইটলি প্যাক ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ଉପରଟା ফ্ল্যাট শেপ না নাই हां তাহলে সেই পয়েন্টটা কহিলা দেন ଆଉ কোন ଏ କୋଉଠି ଥାଏ ସ୍କିନ୍ ମାଉଥ एंड ओइसोफागस कोटा जो फूड पाइप एडा एडा हो जो ओइसोफागस बुझेला ये वाला काहे विषय रे एडी लोकेशन बॉर्डर लोकेशन हम जानले ये स्किन माउथ एंड कोन ओइसोफागस रे रहउछ देन सिक्रेशन बेस रे कोन एपिथेलियल टिश्यू अछि production and secretion of a mucus enzyme hormones sweet saliva देखो secretion 3.11 c 3.11 c 3.11 स्ट्रक्चर टा सी टा एटा होची कोन एपिथेलियल टिश्यू वन टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जार काम है सिक्रेशन
कौन सिक्रेशन करे? एंजाइम, हार्मोन, स्वीट, सैलिवा। सेल स्पेशलाइज्ड कहा भाई ना फॉर प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग सब्सटेंसेस। अभिजीत, अभिजीत कैमरा ऑन करो। सेल स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एंड रियलाइजिंग substances may be cuboidal and columnar। देखो क्यूबोइडल शेप की नहीं, এটা क्यूबोइडल शेप ना नहीं, এটা क्यूबोइडल शेप ना नहीं, क्यूबोइडल शेप जो एटा जो हमर को ब्रिक्स शेप रो। ताले एटा हमें कोन करे ना सिक्रेशन करे। सिक्रेशन कोन करे? एंजाइम, हार्मोन, स्वीट। ये कोठी थाए ना सालिवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड एंड स्टोमक लाइनिंग। देखो तीनटा पार्ट पढ़िले। देखो 4 सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन सेंस जानिचे, सेंस ऑर्गन सेमती सेंसरी फंक्शन स्मेल, टेस्ट, साउंड, balance। बुझला? देन स्पेशलाइज्ड टू रिसेप्टर सेल्स हैविंग हेयरी लाइक सिलिया। एठी कोन थाए? हेयर लाइक सिलिया रही थाए। बुझला? देखो कहाँ 11 पॉइंट हेड देखो एठी हेयर लाइक सिलिया रही नहीं, देखुछ ना नहीं? नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स माने नोज जो नोस्ट्रिल्स रहिला एंड टेस्ट बड्स एंड इनर ईयर रे भी रहिला। पचारि नेक्स्ट क्लास है सेंसरी फंक्शन कौन एपिथेलियल टिश्यू देन सिक्रेशन प्रोटेक्शन ए विशेष रे सब डिस्क्राइब करी मते कहयो। देन आसिला एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन माने कोन? एब्जॉर्ब करिवो। देन एफिशिएंट टू अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड एक्सेट्रा। सिंगल लेयर ऑफ अ टॉल पिलर लाइक सेल्स। देखो एडी पिलर लाइक सेल्स एटा इटा अपन विथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। एटा देखो आ ऊपर भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसा न। लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ये कोठी था ना, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में था। क्लियर? बुझल तो? सेंसरी ना ऑब्जर्वेशन। सेंसरीटा होची ये कोन ना स्मेल टेस्ट ए सब सेंसरी ऑर्गन ना। तो स्मेल हेल्प करिवो, टेस्ट रे कोन जिंस टेस्ट करलो, साउंड, बैलेंस ए सब जिंस रे। ये देखो एडी सिलिया लाइक स्ट्रक्चर आरो अछि। आ ये कोठी थाए? नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल माने जो नोज। आ देन टेस्ट बड्स आ इनर ईयर रे रहि थाए। इनर ईयर माने जो हम ईयर रो भीतर। बुझिला? बुझिला तो? देखो ताले फास्ट हमें देखले कोन एबे अगेन रिवीजन कर दोजे। एक्सचेंज पे देखले ये कौन करे ना लिक्विड और गैस रो डिफ्यूजन करे। आ स्ट्रक्चर टार सिंगल लेयर आ ये सबटु थिन होची जति के एपिथेलियल टिश्यू होची सबटु एडा एपिथेलियल टिश्यू टा होची थिन। आर लाइनिंग आ लोकेशन कोठी थाए ना टिश्यू ऑफ द ब्लड वेसल रे थाए और लंग्स रे थाए। आ प्रोटेक्शन कोन? प्रोटेक्शन रे हेल्प कर कोटा जो इंजरी हमका हे गेले माइक्रोस्कोप जो माइक्रो गुडा के पर एंट्री करिवेनी सेते भाई हेल्प करे ए टिश्यू को टिश्यू प्रोटेक्शन। देन आए बहुत गुडा लेयर आर अछि। अब ये टाइटली पैक हेगी थांदे, टाइटली पैक हेगी थिबारु जोडी टाइटली पैक हेगी रहिले किछि स्पेस रहनी सेते पय जर्म्स गुडा के एंट्री करंदे। आ कोठी कोठी देखा जाए ना हमर स्किन, माउथ एंड ओइसफेगस रे। सिमिलरली सिक्रेशन पे कोन ना सिक्रेशन म्यूकस, एंजाइम्स, हार्मोन, स्वीट, सालिवा एडा सब एथे फंक्शन आर फंक्शन एतिको।
देन ये क्यूबेडाल शेप रो सालिवारी ग्लैंड रे थाए स्टोमाट लाइन रे थाए सिमिलरली सेंसरी फंक्शन कोन सेंस ऑर्गन को हेल्प करियो जेमति स्मेल स्मेल आउ टेस्ट साउंड एथरे हेल्प करिवो एथरे सिलिया लाइक स्ट्रक्चर थाए आ ये कोठी लोकेशन आरो नोस्ट्रल टेस्ट बर्ड आ इनर ईयर स्मेल माने नाको नोज रे रहिला नोज रे सेथवाय नोस्ट्रल ताबे टेस्ट माने कोन टेस्ट बर्ड माने टंग रे रहिला साउंड माने ईयर इनर ईयर बुझि गेलो तो नेक्स्ट सेम ऑब्जर्वेशन बाय रहिला अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाटर a single layer of a tall pillars like cells ଥାଏ a lining or a small lining of a small intestine ये देखा जाए ओके अरे बुझलो तो एबे देखिबा how are various parts connected in our body माने हम बॉडी जो रहिला पार्ट्स गुडा सब पार्ट्स कि हैंड हो लेग हो ये सब केमिति सब कनेक्ट हेगी अछंदी you have read that blood connects different parts of the body by transporting nutrients gases and hormones ताने हम जानछे ब्लड कोन करे ना किछि कनेक्ट करिछि बॉडी रो डिफरेंट पार्ट्स को कोथरे हेल्प होउछि जहा फल कि हम बॉडी रो सब पार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स जाउछि gases आ hormones इजीली ट्रांसफर हे परछि in the same way bones connected and support the body bone भी को कनेक्ट हे के अछि जागे से हम बॉडी की कोन दोउछि सपोर्ट दोउछि and the body from head to toe सेथि पय हम बॉडी कोठु को जाय फॉर्म हेछि head to toe toe माने कोन फुट फिंगर ए टिश्यू that connect and support other tissue माने गुटे टिश्यू आ गोटे टिश्यू संगे जदी कनेक्ट हैला ताको हमें कोन कहबा कनेक्टिव टिश्यू both blood and bones are connective tissue ताले blood टा गोटे connective tissue and bones टा भी गोटे कोन connective tissue are connected so both are connective tissue they are different composition तांग भीतर composition different blood टा हो गोटे fluid किंतु bone टा होचे hard blood टा fluid ना liquid है नहीं but bone टा होची कोन hard this is the difference due to the matrix which is artery soft and jelly like in the blood रे jelly थी रहउची jelly like है ना soft ये रहउचा artery means टिके liquid रहउची किंतु हमरो बोन टा कोन रहउची हार्ड आ सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर आ रिजिड एटा होची इंपोर्टेंट स्वयं कैमरा ऑन करो तुम साइट रे अछो बुझी पारछो तो साइट रे तुमको मु ऑन करेगी क्लास करछे क्लास टाइम रे पंक्चुअलिटी मेंटेन करो हां देख नेक्स्ट पॉइंट कोन रहला the everyday experience mentioned above is related to blood and component the red color of a blood is due to important point एगुडा बुझेला हम ब्लड टा रेड कलर कोन भाई ड्यू टू hemoglobin on iron rich protein in the red blood cell rbc full form को red blood cells rbc live for about 4 months हम बॉडी रे rbc केते टाइम रहि परिबो and are replaced regularly replaced हो जाए नहीं प्लेटलेट कौन हेल्प करे helps in blood रे भी थाए blood clotting at the site of the injury हेले blood clotting ପାଇଁ किए हेल्प करे प्लेटलेट during exercise or running
तुम जो एक्सरसाइज और रनिंग कल मसल्स नीड मोर ऑक्सीजन से मसल कौन रिक्वायरमेंट कर अधिक ऑक्सीजन सो ब्रीथिंग बिकम्स फास्टर ब्रेथ भी बहुत स्पीड हो जाउची एंड ब्लड फ्लो इंक्रीजेस ब्लड फ्लो भी इंक्रीज करूची डब्ल्यूबीसी रो वर्क कोन ना ये कलेक्ट इन्फेक्टेड एरिया causing pus formation and inflammation means causing redness and swelling and possible pus formation the infected area ताले हमें कहा विषय पढ़ले ब्लड भितर कौन कंपोनेंट थाए ब्लड भितर कौन कंपोनेंट रहला ना हमर ब्लड टा हीमोग्लोबिन रहउचे रेड ब्लड कप सेल हो आरबीसी डब्ल्यूबीसी रहउचे प्लेटलेट रहउचे सुन न देखो डब्ल्यूबीसी रे स्ट्रक्चर एटा प्लेटलेट आरबीसी नी कैप लॉन्ग बोन पोलर बोन टेंडन टा कौन जॉइंट टा है ना कार्टिलेज लिगामेंट पढ़िबा कनेक्टिव टिश्यू विषय टेबुल इंपोर्टेंट टेबुल एटा बढ़िया देइजे मते तो भल लागुचे प्रीवियस रे जो बुक टा थिला ता बुक ए बुक टा बढ़िया देइचे बुक बुझेला ओके एबे हमें कहा विषय कनेक्टिव टिश्यू बिले कोन जानले ब्लड एंड बोन्स कनेक्टिव टिश्यू कोन तो सेही कनेक्टिव टिश्यू विषय रे हमें ठीक है मोर डिस्क्राइब करिया अधे किछि देखिबा कोन अछि सब ए टेबल रो देखो टच योर एल्बो को टच करो कैमरा ऑन करो अभिजीत एल्बो को टच करो ए हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर गोटा हार्ड लागिवो गिव्स एक्सपीरियंस देखिलो कोन ताले एटा हार्ड लागिला हां कि नहीं देन फंक्शन कोन तारो ना ये स्ट्रेंथ और सपोर्ट और प्रोटेक्ट करे ताले एठी कोन अछि बोली तुम जानलो बोन एठी कोन अछि बोन नेक्स्ट एक्शन करबा कोन करबा ना प्रेस एंड फोल्ड योर ईयर तुम ईयर को धर के ऑन करो जल्दी ईयर फोल्ड करो देखो सब हां ईयर फोल्ड करो ईयर फोल्ड करले कोन देखु जो जेंटली प्रेस योर नोज अभिजीत ऑन कर देबो ईयर तो हां ताले प्रेस योर नोज एंड स्टॉप जेंटली प्रेस योर नोज ए नहीं नोज ना नहीं नोज नहीं क्लोज करो नोज नहीं नोज क्लोज करो नहीं हल्का देखो नोज ईयर एंड जेंटली प्रेस योर नोज एंड स्टॉप बुझला ताले ए जो ईयर देखुछ आ नोज देखुछ हां कि नहीं ये भी होछ वन टाइप ऑफ बोन और कनेक्टिव टिश्यू किंतु एठी कोन कनेक्टिव टिश्यू अछि ना ये रहउछि सॉफ्ट सॉफ्ट लागुछि ना नहीं जो एल्बो देखिला आ एटा देखिलो कोडा ईयर एंड नोज टा सॉफ्ट लागुछि ना नहीं सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर दैट रिटेन शेप अगेन तमे ताको जदि इंडिया माने कोन कर दोछ फोल्ड कर दोछ पुनी छाड़ देले पुनी जगह को से हे जाउछि हां कि नहीं जो से आगु दिला से हो जाउ ने हां आर फंक्शन कोन ना ये प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्वेश्चंस ऑन द एंड ऑफ बोन्स फॉर शॉक ऑब्जर्वेशन एटा जो ए कनेक्टिव टिश्यू को हमें कोन कहबा कार्टिलेज
ताले काटे आमे दे जानिथिले इज कोन हैला ब्लड आ बोन तो सेथुर आसिला हमर सेथुर कोन कार्टिलेज भी वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आ कार्टिलेज टा कोठी कोठी देखिले कोठी कोठी कार्टिलेज रहला कोठी कोठी कार्टिलेज रहला कार्टिलेज टा कोठी कोठी हम देखिले हम बॉडी पार्ट्स रा अरे ईयर रे आ कोठी हां तो से तो कहछ देखो नेक्स्ट एक्टिविटी करियो कोन अछि एक्शन टच योर forearm muscle and wiggle your fingers देख कौन होचे ना feel movement our forearm and their two fingers are far away connected connect कौन connected है कि रही bone to bone है कि नहीं bone to bone सॉरी muscle to bone ताले हमें ताऊ कौन कहबा ये कोथरे हेल्प करे मूवमेंट पे आ कौन कहबा टेंडन कौन कहबा टेंडन ता सेमती चेयर रे बसो मूव योर लेग तुम लेग को मूव करो बस जो लेग को मूव करो तापरे पुणी से जो लेग को ऊपर को आना हरे नी को ताले आठुटा जॉइंट टा गोटे रहिला सेटा ताले कोन तार गोटे लिमिट अछि ना पूरा जॉइन करि परियो तुम 360 डिग्री घुरै परियो ना connected bone and provide stability limit movement and helps to prevent dislocation एठी ताले कोन अछि नी रे लिगामेंट कोन अछि ए भितरु शॉर्ट क्वेश्चन सियोर तमर आसीओ इंपोर्टेंट का विषय बोन कार्टिलेज टेंडन आ लिगामेंट मु भी जो एग्जाम करबी तमरो सल्ला परे एथरे सियोर पकेई बसे अरे बुझेला तो bones have a rigid matrix containing कौन रोची बोन रे कैल्शियम एंड फास्फोरस जेते बेले हमें बोन कोन से वीक हो कि कार जो बोन ब्रेक हो हड़ंग तो हमें कौन कहूचे मैं डॉक्टर कहूनी कैल्शियम खाइबो बोले कैल्शियम टैबलेट यूज करियो बोले हई नहीं एंड गिव हिम द स्ट्रेंथ ये कौन दोची कैल्शियम और फास्फोरस कौन दोची स्ट्रेंथ दोची और रिजिडिटी दोची it constructs cartilage has a soft jelly like matrix and provides flexibility एटा के flexibility दोची cartilage दोची flexibility and other connective tissue आ कौन connective tissue रहिला ना tendon ligament tendon कौन करूची ना tendon connect करूची muscle to bone important who connect मु क्वेश्चन देबी तुमको शॉर्ट क्वेश्चन who connect muscle to bone then पचरी who connect bone to bone कौन लिगामेंट एड मु पढ़ेली कौन टेंडन टा कौन कनेक्ट करे मसल टू बोन लिगामेंट टा वैसे 3 एटा होची लास्ट है नहीं कैन यू कंट्रोल मूवमेंट इन योर बॉडी तुम बॉडी रो मूवमेंट को तुम कंट्रोल करि परियो कि देखिबा करि परिबा किछि दिन कंट्रोल करि परिबा आ किछि दिन कंट्रोल करि परिबा जो हार्ट बीट होची 72 मिनिट्स ताको थोड़े टिके अटके कि 10 मिनिट्स कलो हार्ट बीट टाको हां आ जो तुम नौचो ब्रीथिंग तुम देखि टिके बंद कर दलो 10 मिनिट्स पई पॉसिबल की नो केबे ट्राई करिवनी बुझला ताहले किछि दिनस अछि हमें बॉडी को कंट्रोल करि परिबा आ किछि दिनस अछि कंट्रोल करि परिबा नाही some movements are under our conscious control किछि दिनस अछि कंट्रोल जेम कि रनिंग राइटिंग लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट गोटे ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करलिबो एगुडा सब तम अनुसार होची सेति भाई आगु कोन कहूचे वॉलंटरी मूवमेंट जोटा निज इच्छा रे हला ताको हमें कोन कहूचे वॉलंटरी and are carried by skeletal muscle ताले इथरे किए हेल्प करूचे ना skeletal muscle which are attached to the skeleton
ନା ଆମ skeleton ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ attach ହେଇକି ଅଛି। They are made of bundles of long cylindrical cells called muscle fiber। ତାକୁ କଣ କହିବା? ଇଏ unbranched ଆଉ multi। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କେସ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନଭଲୁଣ୍ଟାରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଦ ବଡି ଅଛି, ଇନଭଲୁଣ୍ଟାରୀ। ୟେସ୍, କେମିତି ନା ଯେମିତି କି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯୋଉଟା ଯାଉଛି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଯାହା ନାହିଁ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଫୁଡ ର ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଯୋଉ ଫୁଡ ଖାଇ ଦଉଛେ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ହାର୍ଟ ର ବିଟିଂ ଇଏ ଆମ ଅନୁସାରେ ହଉଛି କି? ଏଗୁଡା କହିବା ଆମେ ଇନଭଲୁଣ୍ଟାରୀ, ଯୋଉଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ପସିବଲ ନୁହଁ, ସେଗୁଡାକ ଆମେ କଣ କହିବା? The muscle responsible for this movement includes smooth muscle। एगुड़ा सब जो मो बॉडी रे मूव करछि सेटा स्मूथ मसल व्हिच आर फाउंड इन ऑर्गन लाइक स्टोमक, इंटेस्टाइन, सो इनवॉल्यूंटरी है नहीं। दे आर स्पाइनल शेप्ड। देखियो वॉल्यूम मु कोन कहले एठी वॉल्यूंटरी रो को शेप मसलटा। हां एठी ने कहले वॉल्यूंटरी रो शेप कोन मसल? सिलिंड्रिकल सेल कॉल्ड मसल फाइबर और अनब्रांच्ड है नहीं। किंतु इनवॉल्यूंटरी रो कोन? हां, spindle shape have a single nucleus and lack striation। they help for slow continuous and movement like digestion ପାଇଁ help करे किए से involuntary। skeletal muscle एमिति smooth muscle ଆଉ cardiac muscle heart रे रहिला, बुझिला? बढिया लागो निज विषय रे उडा सब पढुचे ना। एबे देखिया कार्डियक मसल। कार्डियक मीन्स तमे जानिचो हार्ट। ये कोठी फाउंड हुए हार्ट रे। They are fibers of cylinder and are branched with the single nucleus and have faint striations। Cardiac muscle work tirelessly। माने आमे पछे टायर्ड हेकी सोई पड़िबा, किंतु कार्डियक मसल जदि टायर्ड हेकी सोइला पॉसिबल न हो कि नहीं। आउ सकाळ को नथो डायरेक्ट टिकेट होची फ्लाइट है कि नहीं। हाँ हाँ, बुझला ताले ये कार्डिया जो एई मसलटा जो हार्ट बीटटा ये कंटीन्यूअसली हमर चलछि ना नहीं, ये हेल्प करछो कार्डियक मसल। ताले कार्डियक मसल्स tirelessly rhythmically enabling this heart to beat throughout life without fatigue। ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन आसिला बिले, हाउ डज द बॉडी सेंस कम्युनिकेट एंड रेस्पॉन्स। आम बॉडी रो केमिति सेंस अछि आ कम्युनिकेट केमिति करूछि आ गोटे एक्शन रो रिएक्शन केमिति होछि माने रेस्पॉन्ड केमिति करूछि, बुझि पारल तो एति कहि पढिबा। Have you noticed how quickly you pull your hands away from something hot? मन करो सपोज गोटे हॉट ऑब्जेक्ट को दल दम फिंगर टा तमे को रखुछ कि सडन आंसर ना नहीं। एंड हाउ टू रिमेम्बर द लिरिक्स, मन गोटे सॉन्ग टे होची तमे ताको किंदे गाई दोछो मन रखी कि हां कि नहीं। दिस एक्शन ये कंट्रोल किए करूचे नर्व टिश्यू, किए गुडा सब कंट्रोल करूचे which forms the body controls and the coordination network। the brain acts as the control center। ताले हमर कंट्रोल सेंटर कोटा brain। and muscle activity memory and muscles both voluntary and involuntary। muscle two type ର ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି voluntary ଆଉ ଗୋଟେ involuntary। cannot function independently, they are received instruction from the nerve tissue। example during exercise the brain signals the heart beat faster to meet the body's increased oxygen demand। ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି ତମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରନିଂ କରୁଛେ ବା କୌଣସି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମ ବଡି କଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି? ମୋର ଅକ୍ସିଜେନ। କଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି? then the cells of a nerve tissue are called neurons। nerve tissue जोटा रहला जो nerve tissue जो सेल रहला ताको कोन कहउछ हमें
neurons, then nerve cells which are specialized receive process and transmit message. ये कौन करे message transmit करे. Suppose पहले ଆମର କଣ ହେଇଛି କହିଲ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଗୋଟେ ମନକର ମଶାଟେ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ିଲା ସଡନ ଆମ ଯାଉଛି ହାତ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ସନ ଟା ହଉଛି ଏଥିରେ କିଏ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ନର୍ଭ ସେଲ୍ କିଏ ଯେ ये मेसेज ट्रांसफॉर्म करे. न्यूरॉन ର ତିନିଟା मेन पार्ट ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି सेल बॉडी हाँ 10 सेल बॉडी ଯୋଉଥିରେ କି न्यूक्लियस ଆଉ कंट्रोल ଦି सेल एक्टिविटीज करे. देन आसला डेंड्राइड जे कि रिसीव करे सिग्नल ଆଉ एक्शन ये मेसेज कैरी करे. द एक्शन टर्मिनल ट्रांसमिट द मेसेज अदर सेल. देखो एटा होची ये होची एक्शन. देखो स्ट्रक्चर रे एक्शन रा काम कोन मेसेज नबो कोठु आनिबो सेल रो ए जो सेल बॉडी रो डेंड्राइन का है एटा होची डेंड्राइन रो काम कोन ये सिग्नल रिसीव करियो कोन एठू ए जो ब्रांच है आउट हां ए ब्रांच ये कौन हो न्यू नर्वस सिस्टम हो न्यूरॉन. ताले एतिके थिला पिले हमर आज कोन 3.3 जेटा कोन दिला एनिमल टिश्यू.